Hello my dear students, I welcome you to this class. In previous classes we have already covered the poem like All Things Bright and Beautiful, composed by C.F. Alexander, and the second topic is A Letter to God, written by G.L. Fuentes. And we have also completed its comprehension questions and functional grammars and notes and glossaries and so on. Today we shall discuss the most important topic, a new topic like phrase and clause. Today's teaching point is phrase and clause. What does a phrase mean and what does a clause mean? And it is a example. Today we shall discuss these points one by one. Let us start. First we see phrase. Before go through the definition of these two words like phrase and a clause, first we look at the examples written by. First, I don't know his address. Number two, I don't know where he lives. Point three, they expected to win the match. Four, they expected that they would win the match. Look at the four examples. A charity example का हमें देखिबा. The first one is I don't know his address. The second one, I don't know where he lives. And the third one, they expected to win the match. And fourth one is they expected that they would win the match. Now we see and now we examine these four sentences. First we see I don't know his address. First one is his address. Then I don't know where he lives. They expected to win the match. And they expected that they would win the match. What you see or what distinction you see in these sentences? ए वाक्य चारोटी वाक्य आम लिखिं चारोटी वाक्य आम पार्थक्य कौन देखुं? प्रथम देखिले हिज एड्रेस and it expresses a meaning. Then where he lives, it expresses also a meaning. To win the match, it also expresses a meaning. That they would win the match, it also expresses a meaning. तेणु प्रत्येक गोटे गोटे अर्थ बाहर
निर्दिष्ट अर्थ बाहर फास्ट वी सी हिज एड्रेस ये गोटे एड्रेस है गोटे अंश वाक्यर गोटे अंश जहाँ जो थे कि आमर कर्ता क्रियापद नाही देयर इज नो सब्जेक्ट देयर इज नो वर्ब एंड व्हेयर ही लिव्स हियर ही इज द सब्जेक्ट एंड लिव्स इज द verb and here both subject and present both subject and predicate are present here. To win the match it expresses a meaning but it doesn't have a subject and a predicate. यार अर्थ ये बाहर किंतु से कौन कर्ता पद ना क्रियापद ना देन दैट दे वुड विन द मैच ये दे है सब्जेक्ट वुड विन है भर्ब तेणु ये आमर सब्जेक्ट अच्छी भर्ब अच्छी सब्जेक्ट अच्छी ये सब्जेक्ट ये भर्ब ये सब्जेक्ट ये भर्ब तेणु तेणु एम जानुंट जे दुईटा वाक्य एक नंबर वाक्य और 3 नंबर वाक्य कर्ता पद ना क्रियापद ना किंतु ए गोटे अर्थ प्रकाश होउछि 2 नंबर और 4 नंबर वाक्य आम देखिले जे कर्ता पद अच्छी एवं क्रिया कि प्रेडिकेट विधेयक अंश रही अछि कर्ता पद अच्छी क्रियापद रही अछि किंतु एथिरु गोटे अर्थ प्रकाश होउछि तेणु आज आलोच्य प्रसंग द पॉइंट टुडेज पॉइंट इज फ्रेज एंड क्लोज तेणु यही जो 4टी एग्जाम्पल आम जापर फ्रेज ए कौड़ा ना फास्ट वन हूँ फ्रेज ये हूँ फ्रेज दैट इज फ्रेज देन क्लोज दैट इज क्लोज फ्रेज 1 नंबर वाक्य को आम फ्रेज बोली कहवा 3 नंबर वाक्यर जो अंडरलाइन अंश को आम फ्रेज बोली कहवा एवं 4 नंबर वाक्यर लगे अंडरलाइन अंश को आम क्लोज बोली कहवा तेणु ये आम जानवा पाइले जे फ्रेज रे कौन से कर्ता पद बा क्रियापद ना सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट ना एवं क्लोज रे देखिले सब्जेक्ट अच्छी बा भर्ब अच्छी बा प्रेडिकेट पार्ट रही अच्छी तेणु now we write its definition यार बर्तमान आम संज्ञा निरूपण करवा जे फ्रेज कहले कौन आउ क्लोज कहले कौन तेणु देखे फास्ट फ्रेज मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a sense or meaning but not complete sense and it has no subject and no predicate. A group of words that makes sense or meaning but not complete sense or meaning and it has no subject and no predicate. तेणु कि केतेक शब्दर समाहार होइथिबो एथिरु अर्थ किसी अर्थ बाहरु थिबो किंबा संपूर्ण अर्थ मध्य बेले बेले यह देउ न थाए एवं यार कौन कर्ता पद नथिबो बा विधेयक अंश नथिबो प्रेडिकेट पार्ट नथिबो ताको आमे फ्रेज बोली कहबा देन example
no one knows his address. No one knows his address. His address. एला फ्रेज से भले आमर एग्जांपल मत आहुर रही पारिबो at a sunset, in the morning, at noon, by the roadside, ding dong the bell, ding dong the bell, in the river bank, etc. এইগুড়া আমি গোटे गोटे फ्रेज बोली कहवा हिज एड्रेस at a sunset, in the morning, at noon, by the roadside, ding dong the bell, in the river bank, এইগুড়া আমি गोटे गोटे फ्रेज बोली कहि परिबा कारण एटा गोटे गोटे अर्थ प्रकाश करूअछि एटर अर्थ किछि गोटे बाहरु अछि किंतु एथिरे देयर इज नो सब्जेक्ट एंड देयर इज नो प्रेडिकेट एथिरे कोनोसी सब्जेक्ट नाही किबा प्रेडिकेट नाही तेनु ताकू हम कहिबा फ्रेज एवं फ्रेज मीन्स वाक्यांश बा खंडवाक्य वाक्यांश बा खंडवाक्य को आम फ्रेज कहले तार ओडिया मीनिंग होउची बा ओडिया अर्थ होउची वाक्यांश गोटे वाक्यर अंश किंबा खंडवाक्य ताकू बोले आम कही था तेणु एथिरे खंडवाक्य फ्रेजर अर्थ खंडवाक्य क्लोजर अर्थ मध्य होला खंडवाक्य किंतु एतिकी तफात बा एतिकी पार्थक्य जे फ्रेज रे सब्जेक्ट न थाए प्रेडिकेट न थाए किंतु क्लोज रे सब्जेक्ट थाए प्रेडिकेट थाए तेणु तापर देखिबा आमे क्लोज वर्तमान फ्रेजर अर्थ आमे निश्चित बुझी जाइथिबा एवं समस्त लिखि नबा फ्रेज कहले कौन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट और जोटा कि लाइक फ्रेज एंड क्लोज फॉर अस आम समस्त यहाँ हूँ गोटे मुख्य प्रसंग फ्रेज कहले आम साधारणतः फ्रेजर अर्थ दुटा जाक सामान बोले आम भावी था कि वास्तव में ताहा नुह फ्रेजर अर्थ क्लोजर अर्थ आम ओडिया सामान अर्थ बुझुले तार व्यवहार संपूर्ण अलग तेणु फ्रेजर हूँ केते गुड़े शब्दर समाहार होथिबो किछि निर्दिष्ट अर्थ गोटे निर्दिष्ट अर्थ प्रकाश होथिबो किंतु सेतिरे कोनोसी कर्तापद नथिबो बा क्रियापद नथिबो एवं ताको आमे फ्रेज बोली कहबा एवं ठीक से बोली या पर हम देखिबा क्लोज कहले कौन देन क्लोज क्लोज कहले मध्य आमर वाक्यांश बा खंडवाक्य वाक्यांश बा खंडवाक्य तेणु क्लोज कहले ए ग्रुप ऑफ words that forms a part of a bigger sentence or it may be
A simple sentence having or containing a simple sentence which contains a subject and a predicate of its own. आमे देखिबा a group of words that forms a part of a bigger sentence, or it may be a simple sentence which contains a subject and a predicate of its own. एवं ये हूँ केते गुड़िए शब्दार समाहार होइथिबो एवं सेतिरे एवं जहाँकि आमर गोटे दीर्घ वाक्यर एक अंश रूप में व्यवहार होई पारे किंबा गोटे सरल वाक्य होई पारे जहाँ भितरे गोटे कर्ता पद थिबो गोटे प्रेडिकेट पार्ट मध्य थिबो बा विधेयक अंश मध्य थिबो ताको आमे क्लोज बोली कहिबा. तेणु कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लोज. ये थिला फ्रेज एवं क्लोज मध्य तफात बा पार्थक्य बा कि डिस्टिंक्शन. तेणु फ्रेज कहला साधारणतः जानिले जे फ्रेज हूँ आमर केते गुड़े शब्दर समाहार होइथिबो एवं से कौन कर्ता पद नथिबो क्रियापद नथिबो किंतु सेठी गोटे अर्थ प्रकाश होउथिबो. ये हला फ्रेज. किंतु क्लोज कहला माने सेतिरे केते गुड़े शब्दर समाहार होइथिबो सेतिरे कर्ता पद थिबो क्रियापद थिबो एवं सेटा गोटे वाक्य होई पारे सरल वाक्य होई पारे किबा गोटे दीर्घ वाक्यर एक अंश होई पारे ताको आमे क्लोज बोली कहिबा. एवं ये जो क्लोज आम देखुचंती एवं क्लोज रो केते प्रकार क्लोज कथा हम जानिछंती. तेणु साधारणतः आम क्लास 9 रे बा क्लास 8 9 रे आम देखिथिबा क्लोज कहले आम किछि बुझिथिबा कि से क्लोज विषय आज आम आलोचना करिबा क्लोज केते प्रकार. तेणु साधारण कि क्लोज टू टाइप्स. क्लोज होची दी प्रकार. द फर्स्ट वन इज मेन और प्रिंसिपल. मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज. ताको आमे मेन क्लोज कहि परिबा प्रिंसिपल क्लोज बोली कहि परिबा इंडिपेंडेंट क्लोज बोली मधा आमे कहि परिबा. तेणु यार प्रथमटा होची आमर मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज. देन सेकेंड वन इज subordinate clause. Subordinate clause or dependent clause. तेणु द सेकेंड वन इज द्वितीय क्लोज टीर नाम हूँ सबऑर्डिनेट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज. तेणु यार अर्थ है जे प्रथम हूँ मुख्य खंडवाक्य बा प्रधान खंडवाक्य बा स्वाधीन खंडवाक्य. प्रथम खंडवाक्य जहाँ को आम इंग्राजी में कहते मेन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज. देन सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लोज सहयोगी
खंडवाक्य सबऑर्डिनेट सहयोगी खंडवाक्य then another is called name it's a another name is dependent clause निर्भरशील जे अन्य उपर निर्भर करे that depends on other clauses for its own meaning तेणु निजर अर्थ प्रकाश करने जे अन्यर सहयोग कि दरकार करे ताको आम डिपेंडेंट क्लोज बोली कही था तेणु दिज आर द टू टाइप्स ऑफ क्लोजेस क्लोज हूँ आम दि प्रकार द फर्स्ट वन इज मेन क्लोज एंड सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लोज देन मेन क्लोज देन सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लोज द अदर नेम ऑफ मेन क्लोज इज प्रिंसिपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज एंड सबऑर्डिनेट अदर नेम ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज इज डिपेंडेंट क्लोज ताको आम डिपेंडेंट क्लोज बोली कहि परिबा सबऑर्डिनेट क्लोज कहि परिबा डिपेंडेंट क्लोज बोली आम कहि परिबा कि मो ऊपर कि एक नंबर को आम कहि परिबा मेन क्लोज किबा प्रिंसिपल क्लोज किबा इंडिपेंडेंट क्लोज बोली ताको आम कहि परिबा तेणु ये हला कि मुख्य खंडवाक्य बा स्वाधीन खंडवाक्य द्वितीय अर्थ है सहयोगी खंडवाक्य बा निर्भरशील खंडवाक्य एवं आज आम देखा जे आमर गोटे वाक्य आम कौटा मेन क्लोज एवं कौटा सबऑर्डिनेट क्लोज बा डिपेंडेंट क्लोज बोले आम जाना कौटा को आम कहवा तेणु लुक एट द ब्लैक बोर्ड वेरी केयरफुली फर्स्ट गॉड helps those who help themselves God helps those who help themselves then second one is people who eat too much die early people who eat too much die early then 3 number we know when he will return चार वाक्य फर्स्ट God helps those who help themselves second people who eat too much die early we know when he will return then the mice will play when the cat is away the mice will play when the cat is away now we look at these examples ए एग्जांपल गुड़ आम देखा बर्तमान आमर देखिए आम देखा कौटा मेन क्लोज एवं कौटा आमर सबऑर्डिनेट क्लोज आमर प्रसंग बर्तमान प्रसंग अच्छी जे आम ये चारोटी वाक्य बर्तमान बाछा जे मेन क्लोज किए आ सबऑर्डिनेट क्लोज किए तेणु जो क्लोज हूँ दी प्रकार जे मेन क्लोज फर्स्ट वन इज मेन क्लोज सेकेंड वन इज सबऑर्डिनेट क्लोज तेणु नाउ वी हैव टू पॉइंट आउट what is which portion of the sentence belongs to main clause and which portion belongs to subordinate clause or main clause or subordinate clause तेणु God helps those who help themselves ये वाक्यटी को आम क्लास 9 रे पढ़ी द स्विमर हु डजंट नीड हर लेग्स
विषय बा सेकेंड चैप्टर रे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स भगवान से मानक साहाय्य करती जो माने स्वेच्छार अन्यर उपकार करती तेणु गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स एथिरो वर्तमान आम बाछिबा जे मेन क्लोज क्या कहवा एवं सबऑर्डिनेट क्लोज क्या आम कहवा तेणु गॉड हेल्प्स दोज God helps those God helps those who then another portion is who help themselves. Then people who eat too much die early. People then who eat too much people are die early. ये है गोटे तेणु तीन नंबर वाक्य को देखा वी नो गोटे व्हेन ही विल रिटर्न आउ गोटे अंश देन द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे अनदर पोर्शन तेणु आम जानी ओडिया प्रोभर्ब गुड़िक जे बाघ घरे मिरिग नाट बोले आम ओडिया कहती कहीं कहीं कथा थोड़े कहती अर्थात द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे तेणु बाघ घरे मिरिग नाट बोली तार को ओडिया कह जाए तेणु गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स भगवान से ही मानक साहाय्य करती जो माने आपे आपे अन्यर उपकार करती देन पीपुल हु ईट टू मच डाई अर्ली जो साधारणतः जो लोक मैंने बेसी खाती से खाई खाई शेष मृत्युवरण करती बोली कथार युवा सब अच्छी आम प्रवचन बा प्रहेलिका बा मैक्सिम बोली कही था नीतिवाणी नीतिवाक्य बोली कही था तेणु आम बर्तमान बाछा ये चारोटी वाक्य को आम प्रत्येक वाक्य को आम दुई भाग में व्यक्त कर सारे कि बर्तमान देखा जे गॉड हेल्प्स दोज ये हूँ मेन क्लोज एम सी देन हु हेल्प देमसेल्व्स ये है एससी सबऑर्डिनेट क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज एससी सबऑर्डिनेट क्लोज एससी मेन क्लोज है एमसी देन पीपल हु ईट टू मच ये है एससी आ बाकी टी है एमसी देन वी नो एमसी मेन क्लोज then when he will return ये है SC then the mice will play when the cat is away then the mice will play ये है MC then when the cat is away ये है SC तेणु बर्तमान देखा God helps those भगवान से ही मानक साहाय्य करती ये है मेन क्लोज हु हेल्प देमसेल्व्स जे आपे आपे बा निज इच्छा स्व इच्छा उपकार करती अन्यर उपकार करती है एससी पीपुल डाई अर्ली लोक मैंने आगुआ मरी जाती शीघ्र मरी जाती कौ माने ना हु ईट टू मच जो मैंने अत्यधिक खाती ये है एससी आ बाकी अंशतिक रहा सेतिक हम एमसी बा मेन क्लोज वी नो व्हेन ही विल रिटर्न वी नो एमसी व्हेन ही विल रिटर्न ये है एससी सबऑर्डिनेट क्लोज द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे ये हूँ आमर एससी द माइस विल प्ले है एमसी आम देखा जो क्लोजर आरंभ डब्ल्यूएच वार्ड बसी देख प्रथम देखिए हु द्वितीय है हु तृतीय है व्हेन तापर आसला व्हेन तृतीय है चतुर्थ है व्हेन तेणु जो क्लोजर आरंभ कौन डब्ल्यूएच वार्ड बसी बा दाट बसी बा देखिए कौन कंजक्शन बसी ताकू आम कहवा कंजक्शन कहले आमर सब कंजक्शन हम ना कि कंजक्शन रही तार पूर्वर बसी बा पूर्वर बसी आरंभ होता आम कहवा सबऑर्डिनेट क्लोज
because it depends, because the subordinate clause depends upon the main clause to express its own meaning. कारण सबोर्डिनेट क्लोज निजर अर्थ प्रकाश करने से मेन क्लोज ऊपर निर्भर करुँची तेणु तेणु इट नीड्स हेल्प टू स्टैंड इटसेल्फ निजे वाक्य संपूर्ण अर्थ प्रकाश करने यह अन्य उपर निर्भर करुँच अर्थात मेन क्लोज उपर निर्भर करुँच तेणु ये मेन क्लोज गुड़िक निजस्व ये द मेन क्लोजेस स्टैंड देमसेल्व्स मेन क्लोज गुड़िक एठारे स्व इच्छा निज निज धरण निज प्रक्रिया निजर अर्थ से प्रकाश कर से निर्भर करू ना तेणु ताको आम मेन क्लोज बोली कहवा एवं मेन क्लोज उपर जी निर्भर करे ताको आम कहवा सबऑर्डिनेट क्लोज बा डिपेंडेंट क्लोज बोली कहवा तेणु मु आशा रखुचे समस्ते मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज उपर निश्चित किसी धारणा पाई एवं संपूर्ण अर्थ संपूर्ण जानापी वाक्यटिक लिखि जदि आम अभ्यास करवा पढ़ा ताहले आउ टे बुझीपर देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट को आम आसवा देन मेन क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज सला सेकेंड पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट को आम आसवा वर्तमान आसला सबऑर्डिनेट क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज आम देखिले बा डिपेंडेंट क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज बा डिपेंडेंट क्लोज आम देखिबा ये सबऑर्डिनेट क्लोज